Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics. Today I will deliver lecture on level surfaces, which is in the chapter Gradient, Divergence and Curl of Vector Calculus Mathematics paper 3rd for the students of BA, BSC second year, second sem first year. Level we will define level surfaces. Suppose phi xyz is a scalar field. Suppose phi xyz is a scalar field. Wait a minute. Suppose phi xyz is a scalar field over region R. The points satisfying an equation of the type phi xyz equal to c constitute a level surface in three-dimensional space. यानी जैसे टेम्परेचर है सी स्टैंड्स फॉर फाई एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट रहे कॉन्स्टिट्यूट. सपोज फाई एक्स वाई जेड इज स्केलर फील्ड है ओवर द रीजन. जैसे टेम्परेचर है डिफरेंट प्लेसेस का या रेनफॉल है डिफरेंट प्लेसेस की, अगर वो कांस्टेंट रहता है, ह्यूमिडिटी है अगर सेम रहती है डिफरेंट प्लेसेस की, तो इस तरह के एग्जांपल लेवल सरफेस जैसे स्फीयर है, उसकी हर एक दूरी डिस्टेंस सेम रहती है, तो ये लेवल सरफेस के एग्जांपल्स हैं. सपोज फाई एक्स वाई जेड इज स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर रीजन है और फाई एक्स वाई जेड स्केलर फील्ड है. द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन ऑफ द टाइप phi xyz equal to c constitute a level surface in three-dimensional space. Level surface is such that at each point on it phi xyz has the same value c. Same value रहती है c की. Thus phi xyz equal to c, where c is an arbitrary constant, constitute a family of level surface in three-dimensional space. तो थ्योरम है let phi xyz be a scalar field over a region R, then through any point of R there passes one and only one level surface. थ्योरम कहती है अगर फाई एक्स बाई जेड कोई स्केलर फील्ड है ओवर ए रीजन आर, देन थ्रू एनी पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू जो रीजन आर है वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस पास कराएगी. देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस. तो प्रूफ इसका लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट ऑफ द रीजन आर. Suppose level surface is phi xyz equal to c1 and phi xyz equal to c2. 1 and 2 हो गए. Passes through the point P. Suppose level surface phi xyz equal to c1 and phi xyz equal to c2. 1 and 2. Passes through the point P. Phi x1 y1 z1 equal to c1. 1 3. Phi x1 y1 z1 equal to c2. But in scalar field phi xyz has a unique value at xyz. Suppose let p x1 y1 z1 be any point of the region R. Level surface is phi xyz equal to c1 and phi xyz equal to c2. passes through the point P. दो पॉइंट से पास कर रही है मान लेते हैं, दो
एक पॉइंट से दो लेवल सरफेस पास कर रही हैं, एक फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, एक फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू C2, पास थ्रू द पॉइंट P। देयरफॉर क्या होगा, फाई एक्स 1/1 Z1, ये P पॉइंट है, P पॉइंट से दो लेवल सरफेस पास कर रही हैं, तो सेटिस्फाई करेंगी ये फाई x1 y1 z1 इक्वल टू C1, फाई x1 y1 फाई x1 y1 z1 इक्वल टू C2। But in scalar field phi x y z has a unique value at x y z, इसकी यूनिक वैल्यू होती हैं, तो 3 और 4 में C1 बराबर C2 होगा। इन स्केलर फील्ड बट इन स्केलर फील्ड phi x y z हैज ए यूनिक वैल्यू, सिंगल वैल्यूड होता है एट x y z फ्रॉम 3 and 4 C1 इक्वल टू C2। It shows that only one level surface pass through P x1 y1 z1, सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास कर सकती है P इस पॉइंट से x1 y1 z1, विच इज़ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू फाई x1 y1 z1। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई। लेवल सरफेस डिफाइन किया, हम उसका यूज़ करते हैं ग्रेडियंट फाई में। डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, जो लेवल सरफेस है उसके नॉर्मल पे होता है वेयर सी इज कांस्टेंट। ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। लेट द सरफेस बी फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। Suppose P x y z be any point on the surface 1 है इक्वेशन नंबर 1, लेवल सरफेस ले ली। P कोई पॉइंट है, is any point on the surface 1 and R with the position value P, तो R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सपोज Q x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड be neighboring point on the surface। suppose Q है ये x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड be neighboring point on the surface and R plus delta R be position vector of Q। Suppose Q क्या है, suppose P x y z is any point on the surface 1 and R be the position vector of P, तो R कैसे दिया गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। suppose Q x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड be a neighboring point on the surface R इक्वल टू डेल्टा R प्लस डेल्टा R है, बी पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो आर प्लस डेल्टा आर क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू जे प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू के। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड इंटू के। लेट क्यू अप्रोच टू पी, क्यू क्या है, अप्रोच करता पी को, देन द लाइन पी क्यू becomes tangent at P। Let Q approach to P, then the line PQ becomes tangent at P to the level surface। Therefore R vector equal to dx into y plus dy into j plus dz into k lies in the tangent plane to the surface at P। Now we have d phi equal to curly phi by curly x dx प्लस करली फाइव बटे करली वाई डी वाई प्लस करली फाइव बाई करली जेड डी जेड। डी फाइव इक्वल टू आई करली फाइव बाई करली एक्स प्लस जे करली फाइव बटे करली वाई प्लस के करली फाइव बाई करली जेड डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के।
तो ये क्या होगा, इक्वल टू del phi डॉट डी आर फॉर as phi x by z is constant, therefore d phi equal to 0. It implies that del phi dot dr equal to 0. d phi क्या होता है, del phi dot dr. दोबारा करो, पी क्यू निकाल लिया. Let q approach to p, then the line pq becomes tangent at p to the level surface. Okay, q neighboring point p पर चले जाए, then the point pq becomes tangent at p to the level surface. Therefore r vector dr vector equal to dxi plus dyj plus dzk lies in the tangent plane to the surface at p. Now we have, ये भी हमारे पास होता है किससे, फ्रॉम कैलकुलस से. डी फाई इक्वल टू करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड. इसको ब्रेकअप करो वेक्टर्स की. डी फाई इक्वल टू आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड डॉट डी एक्स इंटू आई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस डी जेड इंटू के इक्वल del phi डॉट डी आर. डी फाई इक्वल टू del phi डॉट डी आर. ठीक है. तो एज फाई एक्स बाई जेड इज कॉन्स्टेंट, therefore d phi equal to 0. It implies that del phi dot dr equal to 0. Using for implies vector del phi is perpendicular to tangent. Vector del phi is perpendicular to tangent. dr बराबर dxi plus dyj plus dzk which lies in the tangent plane at p. Del phi dot dr equal to 0 implies vector del phi is perpendicular to tangent. dr बराबर dxi plus dyj plus dzk which lies in the tangent plane at p. Perpendicular to tangent dr dxi del phi is perpendicular to dr है. और इसमें कंपोनेंट फॉर्म में dr क्या है, dxi plus dyj plus dc which lies in the, और ये टेंजेंट प्लेन में लाई करता है at p. Thus del phi is normal to the surface phi x y z equal to c. Hence geometrical interpretation of gradient phi is that gradient phi is normal to the surface phi x y z equal to c. Normal to the surface होती है. Next concept, directional derivative of scalar point function. So let phi x y z be define a scalar field in a region R. Suppose p x y z is some point in the region R and q x plus delta x y plus delta y z plus delta z is another point in the region R near to p. q के नेबर, p के नेबरहुड में q है, q x plus delta x y plus delta y z is another point in the region R near to p in the direction of a given unit vector a. a की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन यूनिट वेक्टर a, देन लिमिट q अप्रोच टू p phi of q minus phi of p बटे pq. If it exists, अगर ये एग्जिस्ट करे, is called the directional derivative of phi at p in the direction of a cap. ठीक. नोट है meaning of directional derivative. Let pq equal to delta s be a small element in the direction of unit vector a. Then curly phi by curly s equal to curly q minus curly p बटे pq represents the average rate of change
that is rate of change of phi per unit distance in the direction of a cap. Then delta phi by delta s is equal to phi of q minus phi of p by pq represents the average rate of change, that is rate of change of phi for per unit distance. Delta phi by delta s rate of change of phi per unit distance in the direction of a cap. pq delta s के बराबर है v small element in the direction of unit vector a cap. Then curly phi by curly s delta s, delta phi by delta s क्या हुआ, चेंज इन phi की वैल्यू एट क्यू पे माइनस phi की वैल्यू एट पी पे बटे पी क्यू, ये रेशियो है किस्म से, रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ phi पर unit distance in the direction of a cap. Thus if q approach to p, then limit q approach to p phi q minus phi p by pq equal to limit delta s approach to 0 delta phi by delta s equal to d phi by ds gives the rate of change of phi with respect to distance at a point p, instantaneous है ये, at a point p in the direction of a cap. इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं. थ्योरम है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड फाई एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय डी फाई बाई डी एस एंड इट्स वैल्यू इज डेल फाई डॉट ए कैप, डेल फाई डॉट ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ. तो प्रूफ, लेट क्यू बी a point in the neighborhood of P in the direction of given vector A. A की डायरेक्शन में Q नेबरिंग पॉइंट है और इसके LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ द लाइन PQ. तो लाइन क्या हुई, LI प्लस MJ प्लस NK इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A कैप. A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया LI प्लस mj plus nk. Therefore a cap equal to li cap plus mj cap plus nj cap nk, li cap plus mj cap plus nk cap. If p is any point, if p is the point xyz and pq equal to delta s, then coordinates of q are x plus delta x plus L delta s, y plus M delta s, x plus Z plus N delta s, ये क्योंकि पॉइंट हो गए. Therefore d phi by ds लिमिट q approach to p phi q minus phi p बटे पी क्यू इक्वल टू लिमिट डेल्टा s approach to 0 phi q क्या है, x plus L s L डेल्टा एस, वाई प्लस एम डेल्टा एस, जेड प्लस एन डेल्टा एस माइनस फाई एक्स वाई जेड बटे डेल्टा एस. अब इसको खोल लो टेलर थ्योरम लगा के. इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोच टू 0 फाई एक्स वाई जेड प्लस एल डेल्टा एस करली फाई बाई करली एक्स प्लस एम डेल्टा एस करली फाई बाई करली वाई प्लस एन डेल्टा एस करली फाई बाई करली जेड प्लस वन माइनस फाई एक्स वाई जेड. तो एक्सपेंशन बाय टेलर थ्योरम है, फाई एक्स वाई जेड से फाई एक्स वाई जेड कट गया. तो लिमिट डेल्टा एस अप्रोच टू 0 एल करली फाई बाई करली एक्स प्लस एम करली फाई बाई करली वाई प्लस एन करली फाई बाई करली जेड प्लस वन. और लिमिट लेंगे तो ये क्या आ गया, एल करली फाई बाई करली एक्स प्लस एम करली फाई बाई करली वाई प्लस एन करली फाई बाई करली जेड, विच कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी एस इक्वल, इनका डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. तो दैट इज डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप. Therefore if n be a unit normal to the level surface phi x by z equal to c
at a point p x y z and n be the distance of p from some fixed point a in the direction of n cap, so that delta n represents the element of normal at a in the direction of n cap, then gradient phi equal to d phi by dn into n cap. क्या फॉर्म क्या है? कहता है इफ एन कैप बी ए यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये लेवल सरफेस है, ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस पी से ए एन कैप है. If n cap be a unit normal to the level surface phi x y z equal to c at a point p x y z and n be the distance of p from some fixed point कैपिटल A. ये p से a तक n दूरी है ये, ठीक. इन द डायरेक्शन ऑफ a कैप, ये n कैप की डायरेक्शन में, so that it delta n represents the element of normal at a. ये एलिमेंट है नॉर्मल एट ए का इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप, देन ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई बटे डी एन इंटू एन कैप. ग्रेडियंट फाई की वैल्यू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप होगा, ठीक. तो प्रूफ है बी नो डैट डेल फाई इक्वल curly phi by curly x into I cap plus curly phi by curly y into j cap plus curly phi by curly z into k cap, and del phi is normal to the surface phi x y z equal to c. We know that gradient phi ये होता है, ये पता है, ठीक है. और del phi normal to the level surface होता है phi x y z equal to c, इतना हमें पता है. As n cap is unit vector normal to the surface phi x y z, n cap क्या यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, तो हम डेल फाई को इक्वल लैम्डा टाइम n कैप ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस और डेल फाई भी नॉर्मल टू द सरफेस होता, तो दोनों पैरेलल हो गए डेल फाई और n वेक्टर. So therefore del phi is equal to lambda time n vector, where lambda is to be determined 1. Now d phi by dn ये क्या होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव phi in the direction of n cap. d phi by dn क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव phi in the direction of n cap. अभी किया हमने परली थ्योरम में, जब d phi by dn क्या del phi डॉट a cap था उसमें, यहाँ n cap हो गया. अब क्योंकि ये डेल फाई को लैम्डा एन लिख सकते हैं, एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू लैम्डा, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? डी फाई बाई डी एन इक्वल टू लैम्डा आ गया. तो इसमें पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू डेल फाई इक्वल टू लैम्डा एन कैप में, तो डेल फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप हो जाएगा. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1 वी हैव डेल फाई डेट इज ग्रेडियंट फाई इक्वल डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप. अब जो डी फाई बटे डी एन पॉजिटिव होगा इफ एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग. थ्योरम है शो डैट ग्रेडियंट फाई इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डी फाई बटे डी एस अकर्स. नेक्स्ट थ्योरम है सिद्ध करो, शो करो डैट ग्रेडियंट फाई इज वेक्टर क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ विच the maximum value of d phi बटे डी एन अकर्स, डी फाई बटे डी एस अकर्स, जहाँ मैक्सिमम डी फाई बटे डी एस मैक्सिमम होता है. तो हमें अभी किया हमने डी डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज गिवन बाई डी फाई बाई डी एस इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप. डेल फाई हमने ऊपरली थ्योरम से डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप इन डॉट ए कैप, तो डी एफ फाई बटे डी एन इंटू
एन डॉट ए कैप है। एन डॉट ए कैप क्या कॉस थीटा होता है, डी फाइव बाई डी एन इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एन एंड ए कैप। एन कैप एंड ए कैप एंड और एन कैप के बीच में एंगल है थीटा। नाउ डी फाइव बाई डी एन इंटू कॉस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। एस डी फाइव बटे डी एन तो फिक्स है, कॉस थीटा वेरी कर रहा है -1 से +1, तो कॉस थीटा अगर +1 है ना, वी नो डेट कॉस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू 1। 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0। इट शोज डेट ए एंड एन आर सच डेट वेक्टर ए कैप इज अलोंग द यूनिट नॉर्मल। जब थीटा 0 होगा तो ए कैप अलोंग द यूनिट नॉर्मल होगा। Therefore, directional derivative is maximum along the normal to the surface. Next is maximum value of d phi by dn। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू है वह मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट फाई का। मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, डेल फाई होता है। तो डी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो मैक्सिमम होता है along the normal to the level surface। तो maximum value of d phi by dn equal to absolute gradient phi। अब समरी क्या बनी, हमने क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज़ ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू दी लेवल सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ठीक। दूसरी चीज़ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई बटे डी एन इंटू एन कैप वेयर एन इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। तीसरी चीज़ क्या पढ़ ली हमने, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फाई का इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज डेल फाई डॉट ए कैप। चौथी चीज़ क्या पढ़ी हमने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बटे डी एस occurs in the direction of gradient phi। the maximum value है ना डी फाई बटे डी एस की occur करती है in the direction of gradient phi। maximum value of डी फाई बटे डी एस occurs in the direction of gradient phi। ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है डी फाई बटे डी एस की। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन टू द लेवल सरफेस। Let phi x y z equal to c equation of the level surface है। Suppose capital F x y z p x y z is a point on the surface on the level surface। Their position vector p is op equal to r x I plus y j plus z k। Let q current point x y z capital X capital Y capital Z be any point on the tangent plane at p। p पे हमने tangent plane ड्रॉ किया और उस पर क्यू पॉइंट ले लिया एक्स कैपिटल एक्स वाई जेड। तो पी क्यू नेबरिंग पॉइंट ओ क्यू माइनस ओ पी है, ये एक्स माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस जेड माइनस जेड के। एज पी क्यू लाइज इन द टेंजेंट प्लेन एट पी। पी क्यू क्या लाइज करता है इन द टेंजेंट प्लेन एट पी, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द tangent plane, but we know that del phi is normal to the tangent plane। लेकिन हमें ये पता है कि del phi is normal to the tangent plane होता है। del phi is normal to the tangent plane, therefore pq and del phi are perpendicular, implies pq dot del phi equal to 0। pq क्या निकाला अपने x माइनस एक्स इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई इंटू जे प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड के डॉट
del phi क्या होता है, I curly phi by curly x plus j curly phi by curly y plus k curly phi by curly z equal to 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस स्मॉल x curly phi by curly x plus y माइनस स्मॉल y curly phi by curly y plus z माइनस z curly phi by curly z equal to 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की आ गई, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट p। To find the equation of normal, let q x y z be any point on the normal to the plane at p x y z. Therefore pq lies along the normal to the plane at p, and so pq is parallel to the vector del phi। जब pq है parallel to vector del phi, pq lies along the normal to the प्लेन एट पी, पी पे कोई प्लेन है जिसको हम टेंजेंट प्लेन करते हैं, और पी क्यू लाइज अलॉन्ग द नॉर्मल टू द प्लेन एट पी, एंड सो पी क्यू इज पैरेलल टू द वेक्टर डेल फाई। ग्रेडियंट फाई के पैरेलल होगा, तो पैरेलल है तो पी क्यू डॉट पैरेलल है दो प्लेन, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, पी क्यू क्रॉस डेल फाई इक्वल टू जीरो, which is the vector equation of the normal at p, vector equation normal at p की। तो find the Cartesian form इसके रिगार्डिंग, तो p q and del phi are parallel as, तो x minus small x I plus y minus small y j plus capital Z minus small z k equal to lambda time del phi curly phi by curly x I plus curly phi by curly y j plus curly phi by curly z k। Equating the coefficients of I, j and k, we get capital X minus x बटे curly phi by curly x बराबर capital Y minus small y बटे curly phi by curly y बराबर curly capital Z minus small z बटे curly phi by curly z। तो which is the equation of normal in Cartesian form। You can view this lecture on college YouTube channel named www.bljscollege.com, and if still there is any difficulty you can contact me। We will angle of intersection between two surfaces, the angle of intersection between two surfaces is the angle between normals to the surfaces at the point of intersection। If the two surfaces phi 1 xyz and phi 2 xyz intersect at an angle of theta, then theta is the angle between del phi 1 and del phi 2 at the point of intersection, as del phi 1 del phi 2 normal to the surface, and cos theta is given by del phi 1 dot del phi 2 at a absolute value del phi 1 del phi 2। Thank you students, we will meet in the next lecture। Thank you।